What else? Other locations? Hyderabad, Delhi. Okay, somebody just completed the law. That's great. Well, thank you. Good. Welcome to the law fraternity. So, Nihit is our legal partner. I am a chartered accountant by profession. How many of you are using AI for your work day to day, in terms of drafting or in term of research? Can you just say yes or no in chat? Hello. Yeah. Yes, we are getting a reply. Yeah. We got 1, 2, 3 years. I just used for my assignments in college days. That's so that's also good, by the way. Good, I good, think good, is good. using AI. Nihit, your voice is breaking. Am I Yeah, audible now? yeah, you are audible now. Good, good. I am Uh, so Everyone is using AI. sorry. I'm saying that nowadays everyone is using AI. Yeah, everyone is using AI, but they are using the wrong platform for legal tech. That's the problem. So that's where we are. That's where we are about to explain, because ChatGPT and others are not made for Indian law and Indian tech. So that is not a really way you should be using AI. What we will be covering in this is how you can save time and serve clients better. So basically, the idea is that whatever time you have, ultimately everybody has 24 hours. So the more efficient one is in that 24 hours, the more will be the outcome they will be able to give. I will just start sharing my screen. Let me know once the screen is visible. Is my screen visible? Is my screen visible to Oh, everyone? Yeah. yes. So the idea of this seminar is how lawyers can save time and serve clients better. Anit, can you say once the full screen mode is on? Can you see the full screen? No, no, yeah. Now I can see the full screen. Yeah. So what we will be covering here is basically, I'll just go to the next slide. What we will be, what the problems right now everybody is facing is, how many of you go through these kind of challenges? Hours through going through judgments through from start to end, citations copied by hand, generic AI. तो बेसिकली क्या होता है कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है? आप ये बताओ पहले। हाँ जी. ठीक है, तो आप लोग में से कोई एक जन बोलोगे कि भाई कि जजमेंट को सर्च करने के लिए क्या करते हैं, अभी क्या तरीका अप्रोच करते हैं? इफ यू कुड से इन चैट दैट विल बी बेटर. What kind of what you do right now to search judgments? What are the steps that you take? Nihit, can you explain? अभी आप क्या करते थे before नियम में? Before this Niyam, I used to use Google, Manupatra, SEC, Case Mine, Indian कानून. दो अभी मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिसेंट ट्रेंड है, दे प्रेफर एसईसी बेस में, बाकी जितने भी इंडियन कानून वगैरह को वो कंसिडर नहीं करते हैं. बट रिसर्च के लिए दो प्लेटफॉर्म्स वर बेटर. बट जो मेन प्रॉब्लम फेस होता था, इट वाज लाइक आई यूज टू स्पेंड around 6-7 hours or more than that for finding a correct judgment for myself. Correct, correct. Even if you the judgment are there online, you need to spend hours searching through judgment. Isn't that true for everyone? I think most of the you will concur with what Nihit is saying. If that is something that everybody is facing, can you just say on chat yes? Yeah, people are saying Perplexity, Supreme Today, Claude, Indian Claude. Kanun, Yeah, yeah. Manupatra. We'll come to that. We'll come to that. Why Claude and all are not made for Indian law. So
That's where the challenge is, because see, global law are made for global audience, not for Indian audience, and there are lot of if you see our third point, generic AI that invents case. I think many of you might have heard that there was a even the recently Supreme Court and High Court has basically told people that okay, don't go by just generic AI, don't go by the contents that are basically given by your various chat GPT and all, because they create those kind of scenarios. Isn't it true, निहित? आपने आपने भी जरूर ये फेस किया होगा. बहुत बहुत बार कोर्ट्स में भी आ चुका है। रिसेंटली ये हो रहा है, गुड़गांव में भी हुआ था अभी, और सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। देवर फ्यू लॉयर्स हु हैव यूज्ड, they have used AI and got the answers. They did not verify that answer, and they filed those case laws before the court. और जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि वो एक हेलुसिनेटेड आंसर था, उस नाम का कोई जजमेंट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल. कोई और ऐसा फेस किया है, कोई और बोलना चाहे, अनम्यूट करके बोल सकते हैं. सेम सिचुएशन कोई फेस किया है तो. मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लोगों को। मैं पिछले 11 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ, लॉ में। आई एम लिटिगेटर प्रैक्टिसिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड मल्टीपल वेरियस हाई कोर्ट्स। सो इसमें No, नहीं, आई वांटेड फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस. कोई बताएंगे कि उन्होंने ये सब प्रॉब्लम फेस की है जो नीत बोल रहे हैं, सेम प्रॉब्लम फेस की है. हेलो. नो। हेलो. हाँ, आवाज़ आ रही है। आपका हाँ, फुल स्क्रीन। एक सेकंड हो जाओ, मेरा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गया कुछ, एक सेकंड. अभी दिख रहा है स्क्रीन? हम्म। आई थिंक कोई और भी बताना चाहेंगे तो बेटर रहेगा. कोई और अनम्यूट करके बताना चाहेंगे प्लीज. ओके, आई थिंक वील गेट टू दैट लेटर. और जो इसके अलावा जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए आप लोग क्या क्या यूज करते हैं, कुछ और आप लोग अपना तरफ से फीडबैक देंगे कि आप लोग रिसर्च के लिए क्या क्या यूज करते हैं अभी आज के दिन में. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज फॉर रिसर्च? निहित, हम लोग क्या करते हैं रिसर्च के लिए, लोगों क्या करते हैं, कोई फीडबैक है आप लोगों के, आपके पास आता है? सेम, सबसे इजी है सबसे पहला गूगल में जाना। जो भी हमारा टॉपिक है उसके ऊपर में गूगल में डाल के रिसर्च करें, तो आजकल उसी में ही सब फॉलो करते हैं। उसके हम्म. बाद आपके एसईसी जजमेंट्स वगैरह के लिए, ऐसा चैटबॉट के लिए जो करेंटली है, दे कैन यूज क्लॉड, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और है। सो हम्म. मोस्टली आई नाउ डेज पीपल यूज दोज थिंग्स। So again, that's also a issue, because what happens normally those are something not made for Indian laws, and वो ultimately hallucinate करते हैं. There is a huge possibility of getting a wrong result. So that's where यस, the problem is. I face the same issue. I myself, before this नियम, I try to find answers, या कुछ भी जो इजी मिल जाए वहाँ पर रेफरेंस के लिए। चैट जीपीटी वॉज द बेस्ट थिंग टू डू पहले के लिए। तो बट वहाँ से जो रिप्लाई आता है, दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, बिकॉज आई माई सेल्फ फेस दैट इशू। Yeah, yeah. I think one Mr. Richin would like to say something. Mr. Richin, please go ahead. यू Mr. कैन Richin, can you speak? Yes, sir. Sir, I want to make a note that I used to work as an intern in my district court only. So Hmm. over there, what happened if I used to मेरे को कोई एप्लीकेशन बनानी है सच, जैसे मेरा मेरा व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो Hmm. उसकी इंटरलॉटिकली एप्लीकेशन बनानी है, तो मैंने जेमिनी यूज करता हूँ, लेकिन बट द थिंग इज दैट कि उसमें कोई परफेक्ट नहीं आता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल चीजें सही, आती बिल्कुल. हैं, परफेक्ट चीज नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो रिचिन, वही हम लोग आई थिंक निहित भी को कर रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग कि क्योंकि ये सब ग्लोबल ऑडियंस के लिए बने हैं, ये ग्लोबल प्रोडक्ट्स है, ये लोग क्या करते हैं कि ये रेलेवेंट
इंफॉर्मेशन से जो बेस्ट होती है वो देते हैं। डीप रिसर्च इन ये इंडियन लॉज का नहीं करते हैं, तो वो जेनरिक आंसर देते हैं जो कि काफी हद तक गलत हो सकती है। सो दैट्स वेयर द और चैलेंजेस, और लोग कॉपी उसको कर लेते हैं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ नीत। इसमें ऐड मैं करूंगा कि वो सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, दैट इज फॉर जनरल एवरीथिंग। दोज हम्म। चैट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर लॉ, स्पेशली इंडियन लॉ। करेक्ट। तो ये जो आप बता रहे हैं कि वो एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत जन यूज़ करते हैं वैसा, आप उसमें डिटेल्स डालो लेकिन वो आपको बहुत जेनरिक मिलेगा, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन, यू कैन नॉट फाइल इट बिफोर करेक्टिंग या मॉडिफाई करके आप उसको नहीं कर सकते। इवन इन नेम ऑल्सो आपको हल्का फुल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज फैक्ट्स और हर जगह का, जैसे आप मान लीजिए यूपी से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, कोई पंजाब में होगा, कोई राजस्थान में होगा, कोई साउथ इंडिया में होगा, तमिलनाडु वगैरह में, तो हर जगह का प्रोसीजर ऑफ एंड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी डिफरेंट। So you can get an idea over here that what are the important points, what are the things to be considered while drafting an application। उसके बेसिस पे आप अपना फॉर्मेटिंग उस हिसाब से जो भी कोर्ट एप्लीकेबल है आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आई हैव बीन बिफोर चेन्नई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, तो हर जगह का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। बिल्कुल। सो अभी हम जो ये बता रहे थे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो अगर आप इसका एक हमने एक और समरी किया है कि आपका एक रिसर्च करने में पूरा एक दिन निकल जाता है, एक साइटेशन खोजने में जो कि ओवरऑल हो सकता है वो हो जाता है। और आपका अल्टीमेटली आप जो जिस प्रोफेशन में हो, लीगल प्रोफेशन में, वहां पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू हेलुसिनेट। आपके पास कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन अगर आप रिलाई कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली उसको यू गेट इन्वॉल्व इनटू इट एंड यू गेट अल्टीमेटली आप उसमें बेसिकली उस लूप में फंस जाते हो जब वहां पे एलोकेशन होता है। तो स्पीड विदाउट इजंट अ शॉर्टकट, आपको बहुत जल्दी आंसर हो जाता है, लेकिन इट इज अ रिस्क। सो हाउ टू अवॉइड दैट रिस्क, व्हाट वी कैन डू। तो हम लोग व्हाट वी विल कवर इन दिस इज 5 पार्ट्स। वन इज लीगल रिसर्च में कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, या कैसे एआई आपको हेल्प कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में, citations of laws, matter management, and privacy. Privacy is one of the key pillars of Niyam.ai, wherein we basically are making sure that कोई भी जो डेटा है, everything rights, unlike Gemini or Claude or anything, everything whatever you do, आप जब करते हो तो वो डेटा आपकी इंडिया में नहीं रहती, वो बाहर चली जाती है। नियम का सब कुछ सर्वर है, एवरीथिंग इज इन इंडिया, इट्स मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। तो वो प्राइवेसी इज टोटली टेकन केयर ऑफ। So that's where we are. Um, तो लीगल एआई को जज करने के लिए देर आर 4 प्रिंसिपल्स विच आर देयर। कोई भी लीगल एआई हो, हम लोग ये नहीं बोले कि आप नियम एआई करो, देर आर अदर्स आल्सो इन द मार्केट, बट आपको 4 चीज देखनी होगी। वन इज दैट इज इट मेड फॉर इंडियन लॉ, इंडियन स्टैट्यूट्स एंड जजमेंट, एंड नॉट अ ग्लोबल मॉडल। जहां पे वो ग्लोबल मॉडल होगा, आप कोई क्वेरी करोगे तो इट विल डेफिनेटली स्टार्ट लुकिंग फॉर द ग्लोबल आंसर्स आल्सो, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीवन टू गिव a clear cut exact instruction every time कि please ensure that everything is in India and all। अगर वो भी दोगे तो it will still, अगर वो उसको कुछ इंडिया में मिला नहीं तो वो कुछ ना कुछ बाहर का खोज लेगा। देन मोस्ट सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको आंसर मिलेगा आपको साइटेड रहेगा, लिंक्ड रहेगा। ये नहीं कि रैंडम है, आप उसको जाके क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। एंड ये आपको प्रेसिडेंट जो फॉलो किया वो बताएगा। और प्राइवेसी, जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड, प्राइवेसी इज देयर। तो व्हाट आई विल डू, निहित, मैं एक बार स्टॉप करूंगा, आप एक बार रिसर्च रन करो, सो दैट बिकॉज वी वांट टू बी नॉट जस्ट अ प्रेजेंटेशन, वी वांट इट टू बी इंटरेक्टिव। सो मे बी आप नियम एआई का रिसर्च एक बार प्लेटफॉर्म शेयर करो, तो आप रन करो, दैट विल बी गुड। स्क्रीन शेयर करो। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट लेट मी नो अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। या वी कैन सी योर स्क्रीन। So why don't you run through the screen how it is made and कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो just for information, this is the home page of Niyam.ai.
what we have done, we have made it as simple as ChatGPT so that आपको बहुत easily समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है. एंड इसका जो वर्क थ्रू है, बिकॉज एवरीबडी इज यूज टू ChatGPT, Claude एंड Gemini, तो उसी के डिजाइन में हमने बनाया है इसको, सो दैट लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं हो. सो व्हाई डोंट यू सर्च ऑन वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. I'll just go through Niyam little bit. I'll just go through Niyam little bit. इसमें देखिए जैसे आप रिसर्च का फीचर्स है, ड्राफ्टिंग, ट्रांसलेशन, मैटर्स, यू कैन पुट द मैटर्स ओवर हियर, नोटिसेस वगैरह. सो आई जस्ट गो थ्रू द रिसर्च. So can you go with the draft first? How to draft? How it will help in drafting? ड्राफ्टिंग विल कम. एक रिसर्च कर लेते बिकॉज हमारा फीचर्स उस तरीके से किया हुआ. आई डू दैट. हार्डली इट विल टेक 5 minutes. We will go step by step. I think it will make sense for everyone. If you don't mind, we'll go step by step. पहले research कर लेते हैं. Yeah. जेनरिक सा क्वेश्चन मैंने डाला. So if you see here, it is also verifying, and it gives you. If you see here on the top, it also gives a confidence of नीचे में एक बार नहीं तो एक बार नीचे एक बार दिखा भी दो वो जो confidence आ रहा है statement का नीचे. Yeah, 83%. So इसमें it says कि contract act address compensation for breach of contract. तो ये हमने एक But प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम बनाया है जो कि आपका कॉन्फिडेंस स्कोर भी बनाता है. कई बार क्या होता है कि कुछ हम लोगों से अगर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है तो विल लेट यू नो कि हम 99% कॉन्फिडेंस हमें है और 90 ये नहीं है, बिकॉज क्या क्वेश्चंस के ऊपर भी होता है और इसके ऊपर भी होता है. तो वी आर द ओनली वन हु आर एक्चुअली सेइंग दैट ओके नो वी आर नाउ नॉट 100% श्योर अबाउट इट, वी आर ओनली 80% श्योर अबाउट इट. सो नॉर्मली लोग क्या है, खाली सिंपल डिस्क्लेमर दे देते हैं, प्लीज वेरीफाई, इट कैन गिव रॉन्ग. बट हम हर एक आंसर के साथ हम परसेंटेज देते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर विद द आंसर. या नीड गो इट. also there. एंड निहित एक बार क्लिक करके भी दिखाइएगा जो 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 लिंकेजेस आ रहे हैं. हाँ प्लीज नीड गो इट प्लीज. ये जैसे मैंने लिंक शेयर किया, 73 सेक्शन क्या है. सो इट सेज when the contract is breached, the aggrieved party is entitled for compensation for foreseeable losses arising naturally from the breach. So over here the main thing is कि आपको जो भी लिंक्स आ रहा है आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. और कॉन्फिडेंस रेट भी आपको, जैसे मिस्टर सुधीर ने बताया कि किस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कितना वेरीफाइबल है कितना नहीं है. सो इट्स लाइक वन थिंग. आप लोग को अगर कोई और क्वेश्चन है जिसमें आप चाहते हो कि आई कैन रिसर्च, आई कैन डू ऑन दैट एज वेल, अगर कोई शेयर करना चाहे तो. हाँ किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, वी कैन डू अ लाइव रन आल्सो. मे बी पुट ऑन द चैटबॉट, वी कैन रेप्लिकेट इट. थोड़ा जूम इन कर लो, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है स्क्रीन, लोग पढ़ नहीं पा रहे. या सो कैन एनीवन गिव वन मोर क्वेश्चन. या सबसे बेसिक, लेट्स ट्राई सम क्रिमिनल थिंग. न्यू रिसर्च करना नहीं था न्यू क्वेश्चन में, इसमें इसका फॉलोअप मत करना, अदरवाइज इट विल बी इश्यू. मैं कोई म्यूट कर लेंगे एक बार, कोई पीछे से आवाज आ रही है प्लीज.
I think the question is quite clear. My friend has been arrested by police officer. The officer did not provide me any grounds of arrest or did not provide me the copy of complaint. If I do not even know where that police officer has taken my friend in custody. What is my recourse? So let's try. ये जैसे आप लोग सब जानते होंगे क्रिमिनल लॉ हमारे इंडिया में 2024 के बाद चेंज हो गया था. सो आई वांट इट्स आस्क वेदर यू वांट ओल्ड लॉ और न्यू लॉ. सो आई विल गो फॉर द न्यू लॉ. दिस इज वन थिंग दैट आई फेस्ड इन ऑल द अदर चैटबॉट्स. अगर आप डालते हो तो ये हम्म। इधर इसका नहीं दिखाता या फिर पुराना दिखाता है. तो ये नए सिस्टम ने वाले जैसे ऑटो डिटेक्ट किया कि भाई कि ये पुराना लॉ के हिसाब से कि नया लॉ के हिसाब से, अगर वो टाइम देते हैं तो टाइम नहीं थे, आपने टाइम नहीं दिया था, अगर वो टाइम देते तो वो ये बता दे, वो नया के हिसाब से ही भी कर लेता अपने आप ही, डेट और टाइम देते तो। जैसे इसने मेरे से पूछा, मैंने न्यू लॉ में डला. So let's see the answer. If your friend has been arrested and the police officer has not provided grounds of arrest, a copy of the complaint, or disclosed the place of custody, you have several immediate recourses under the Indian law, particularly with the new criminal law reforms. Firstly, BNS mandates that every person arrested must be informed of the grounds of their arrest. Perfect. Section 47, equivalent to 50, states that police officer making the arrest shall, without unnecessary delay, inform the person arrested of the grounds for such arrest. Furthermore, Section 48 of the BNS requires that police officer to inform the person arrested about their rights to have relative informed. I think Neet, so maybe we can see that. So there is one more question by Mr. Paneer Shelvam. Uh, yeah, so if you see because this is a very In detailed this answer, so the question, confidence score here is 96%. excuse me, Very- sir. Yeah, please. Sir, in this question which sir had just typed, it has not it has shown the particular section that are relevant to it, but it hasn't shown that what all steps we need to be taken. That step one, number one, we need to. So that can come as a follow-up question because the question was so you can do a follow-up question. Neet, can you add the follow-up question? I think that will respond. Please tell me. Yeah, he's asking what steps, what are One the needs next? one Yeah, needs yeah. to Please, take listen. You tell me. what all step one needs to take if such situation occurs. Jesse, I can see over here, in cases where an arrest is made without a warrant on the grounds are not disclosed, seeking anticipatory bail might be the recourse if there is a reason to believe an arrest might be made. However, since your friend is already arrested, the immediate recourse is to seek bail before the appropriate court under such and such, depending on the nature of the offense. If the police officer has taken your friend in to an unknown location, refused to disclose it, you can file habeas corpus petition before the Supreme Court, High Sir, Court, as obliged. So I think it has also mentioned the steps yes, sir. as The well. simple answer was to what for the habeas corpus petition only. We all know that, but the thing is that a person a person Mhm. who don't know anything how to draft a habeas corpus petition, that also So need to be curb it down in it. So I think as a question you can he write can. down that step as a follow-up question, because most of these are based on because see, for a lawyer who knows everything, it may be unnecessary. So I'll if I'll one wants to draft, they can do that. I'll come in between in this. जैसे जो steps था, the my question was what are the recourse. What I feel, जो मेरा experience है, limited knowledge of 10 years, more than 10 years, उसमें भी यही है that if I don't know, I have only one option that I can go search for the police officer कहाँ पर है, कहाँ पर police station है. अगर वो मुझे नहीं पता तो उसका सिर्फ एक ही है option है that I have to file habeas corpus before the honorable high court. अगर मेरे को Nihit, can you please do this? Can you please just write down what are the next follow-up steps I need to take as a simple question? So a lot of your answers also depends upon the kind of questions that you're asking, how you're framing your questions, and what are the exact relevant information that you require as well. So it's a very interactive research session. So the more questions you ask, the more it will understand what you're asking and it will give you the exact steps, right? So again, it's asking you and detecting whether it's old law or new law automatically. So now it's verifying everything. And now in just next few seconds, it will give you the exact steps as well. Go up. So here it is giving you the following steps that needs to be taken. And it's again verifying every little things, every single section, what all things you need to do.
Okay, Neet, maybe we can move to next question. So, Richin, I hope that answers your questions. Just go ahead, try it out. Be as specific as you want, because the more specific you are with your questions, the relevant would be your answer. So it's kind of like what goes in, what comes out situation. Neet, maybe we can take more questions from the chats now. Yeah, I think one question is there regarding attachment before judgment. If you see from Mr. Panniselvam, Neet, you can take that from chat. Just a Yes, second. Just you can copy from chat and just go into a new research. Just start a new research, Neet. I'm seeing the chat first. Where is it? You got the question? No, no, I'm just seeing. Just a second. You can just refresh once, Neet. Where the attachment? This Yeah, one? yeah. This one. Just copy this question. Or maybe you can refine it if you feel that it's incomplete. Where an attachment before judgment can. No, I think it's not copied. Yeah, let me share my screen very quickly. Should I stop? ODT setting, just allow it. Okay, I hope everyone is able to see my screen. So this was one of the questions that came in the chat. How find risk in an executed contract and exit route, right? So I'll just enter this. It has now started doing all the research. Now it is automatically detected, right? Because this is a very vague question. A contract can be anything. It's around breach, termination, performance. There's something you will not find in Gemini. You will not find with Claude. This is or ChatGPT. You will not find this, right? And this is where the problem comes in, where we are able to detect things automatically what user is asking for, and we are able to execute it accordingly. So let's say I'm going to talk about breach for now in this particular section. Now it has started diving deep into the contract tags that exist, and it's going to extract all the relevant information, and it's going to start forming the answers for you, right? And even though this is happening, it's still running a lot of verification behind the scene. So as you can see over here, the answer is very clear. The risk within an executed contract, particularly when a contractual obligations are not met, breach can be identified by examining the terms of the contract itself, right? Then it has identified the risk and potential breaches. It has written over here. Then also at the same time, what are the termination clauses that needs to exist? It is again verifying everything, which is very, very important for any law firm. Or as a matter of fact, this is extremely important, and this is something that is never hallucinated within our system, which is something that rest of the all the systems would do. You can try the same question inside Gemini, ChatGPT, and you would see a very different answer altogether. Right. At the same time, the damages and compensation under with act. So it saves you a huge amount of time in terms of your overall research. And if you want to further ask more questions and follow-up questions, you can always just write down your answers over here, and you will precisely get those answers as well. I'm going to take like a couple of more questions. Okay, so I'm going to take this question now from Mr. Nim. Okay. So whether an attachment before judgment, so it has now again started researching right away. The question was very good. It was very straightforward, and our system was able to get things right away. And that's why it's not asking questions this time. So now it has gone ahead, and here are all the details about it, right? It was a pretty generic question, so it has given a pretty generic answers to it at the same time. And again, you can always ask follow-up questions to it at the same time if you want to just continue getting more informations as you wish and as you want. Please let us know if there are any more questions around research.
If not, then Nihit, maybe you can go ahead with the draft feature and just quickly show the draft feature. Or I'll just quickly walk through the draft feature as well, as many of you had requested. So the draft feature helps you to draft the contracts in an extremely quick pace, right? So what I'm going to do is I'm going to start a new draft over here. Here you can simply write whether you want a specific contract to be very specific, or you can pick up one of the templates that we already have. We can add more templates if you want at the same time. This will help you a huge amount of time, because every single contract is going to get drafted as per different states where the draft is written. Also, at the same time, we support every single Indian languages as well, right? So not necessarily that everyone would want to have a draft in English. So we make it extremely simple. So what I'm going to do is I'm just going to pick up, let's say, an NDA, right? And I'm going to select Delhi over here, and I'm going to draft it in English for now, right? And I'm gonna just quickly just start the draft over here. And as you can see, the draft has started working on right away, right? Here, everything is just pre-ready for you. Now, the moment this is done, you can easily go ahead and start making any of the final changes over here if you want. You can also interact with things. Also, at the same time, you don't need to make all of these changes one by one. You can just select fill template feature, and you can simply, as the AI will start asking you questions, just enter the details over here. So, for example, provide the date in this particular format. So, I will simply say 21st June 2026, and the moment I enter, it will automatically start replacing everything for you in a very simple and efficient manner. And in a matter of no time, your entire contract would be ready, your entire draft would be ready. Right now, imagine that you want to translate this particular contract into Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, all at the same time. Just select these languages, just hit the translate button. That's it. Just wait for some time and it will start working on all the translations for you, right? As you can see, one by one, it has started doing the translation. This is something that you will not see in ChatGPT, Gemini. It's just a simple chat interface, right? So you'll not be able to manage, and at the same time, your sessions will be all over the place versus everything is extremely organized over here, right? As you can see, the Hindi translation is done. The Bengali translation is done. The Telugu translation is also done. The Marathi translation is also done. The Tamil translation is also ready for you. The contract is ready in various languages. Also, at the same time, we give you a very clear scoring in terms of your contract, that this is something that we have built, which is one of the most exclusive solution that you would ever find in the Indian legal software. We are also telling you, here are the things that's missing out in the contract that you need to address, right? Here are the thing that has already been addressed as per contract, and at the same time, we also evaluate all of the past judgments that has been passed by government and the past cases that has been filed, right? So all of those things that could have been missed by an human eye has been covered, and as you can see, these are the three things that's missing. If you want to add this, just click on this, and in a matter of time, all of the drafting will be done again, and these points would be covered for you. Done. It's that simple. So a lot of times we generally miss out on so many different situations, and there are frauds happening every single possible way. So what we do is we constantly train our system with the Indian jurisdiction, with the Indian acts, and all of the judgments that are coming out on a monthly basis, weekly basis. We keep retraining our system to make it extremely easy and help you draft the most powerful contract for all of your clients, right? And this is where we say that AI AI is not going to replace those lawyers who start using such powerful AI systems. And at the same time, you have a complete log trail of who made the change, how those changes were made. Every single of those changes are very clear over here. And once everything is done, you feel everything is done, just mark it as final and just download. That's it. Now, once you have your final contract ready, you can add your headers, you can paste it in your Google Docs or Microsoft Docs, any platform that you're using, and you're all set. And you can just now send out the contract on behalf of your clients who has hired you to execute that, right? Now, this is just an NDA. Now, let's say if you want to draft another contract, right? I'm going to potentially talk about sales deed, for example, right? And again, I'm going to select Maharashtra this time as a law, and I'm going to select this, right? You can also describe more details over here if you want. For example, this contract, this sales deed is between someone who is in Mumbai and someone who is in Delhi, right?
Now you have to cover both the jurisdiction accordingly. So you can mention that. I'm just gonna skip for now because I just want to show a quick example. As you can see, the basic sales deed is now completely ready over here. And again, we'll go and it also says what is the stamp duty of Maharashtra at the moment, right? Which is about 0.1% of the value. Now, if I change this to Madhya Pradesh, it varies, right? If I change this to Delhi, check this, right? 4% for women and 6% for men. It is also required, and also there is two witnesses that are required. That's mandatory. We are also soon adding the ability for you to send and sign and get signatures with a complete audit trail and log, which is going to be like completely legalized. So that is something that's coming out by next weekend as well, right? So again, we make it extremely efficient and simple for you for the things that are missing. Here are the kind of so for this particular CSD, here are the four acts that have been covered specifically, and because we have changed it to Delhi, this got added in real time at the same time, right? So we constantly keep on training our Niyam intelligence on a daily basis to ensure that you are getting the most updated and the most perfectly drafted deeds for you in any language as per any state as you want. That is only going to help you drive better results for your clients when you're managing and help you save more time, because for lawyers we understand that your time is money, and if we can help you save a few hours every single week, that's extra clients that you can take, right? Your team can manage in a much more efficient manner. And many a times we as humans, we miss out on very little integrity and nitty-gritty that will not be missed by AI at any given point. So this is with regards to how our entire translation feature works. Sudhir uncle, and over to you Yeah. for the further presentation. Yeah. So I think we covered basically three parts. One is the research part, second is the drafting part, and along with that, drafting translation part also. So there are two parts in the translation. One is direct translation that you can do, and second is any document which you are drafting, you can translate into multiple languages. So both are there. I'll just show the screen once again. I will just run through the presentation so that you have a full feel of the what we are speaking about before we proceed. Yeah. You can see my screen? Yeah. Yes. So I think we have already covered about research. So as it is, as you have already learned, it's actually also covers judgments. So right now we are expanding the judgments and we are training it every day. Our plan is to cover around 1.5 million judgment by end of this calendar year, and we are actually getting it there very soon, maybe even earlier. So whenever you see any judgments and all, just like Manupatra and all, which actually cost you a very huge amount, and just to give the judgment, here you will be able to get the relevant judgment along with your answers. So it's not just judgment; it's also a relevancy that will be there. Um, I think we already covered draft. Um, Citation is something that is there. So I think that also, if you remember, we have already, whenever there is a research, it's cited that okay, what are the uh, cases, what are the acts that are there. So and those are clickable. It's not just random that is coming. All those are clickable. You can go to that. You can see the validity. And again, every time issues we give the research, it's basically also saying the confidence score that we are having. So we are not claiming that we are 100% correct every time. There could be errors, but we are very transparent about the confidence score that we do. Matters management is also one of the key features. I think maybe Nihit, why don't you run through the matters management part? Yeah, share the screen. Because I think for lawyers, managing the your day-to-day matters is also very important, and it takes a lot of time doing it manually. Nihit? Just a second, I'm sharing. Let me know if it's there. Are you able to see? Your voice is low. Can you increase the voice? Are you able to see? Yeah, we can. Yeah. So do I need to zoom it or it's fine?
Yeah, I think it's broadly fine. You just start explaining how does it work. This matters is like over here. Search for any matters. Suppose I need to add one. A So here, versus if you see, Nate is showing he's adding various matters. just for like the example, you can type the matter name, your client name, contact number, description of the matter, description of the matter like criminal case or anything. Suppose criminal case over here, urgent. आपकी क्लास कितने बजे तक हो चलनी है? बकवास चल रही है, बंद कर दो सारा इसको। हाँ, बोलो। वैसे पूछ रहा हूँ मैं तो। बकवास समझा रहे हैं सारे, कुछ ना है। बंद करो। यहाँ पर आप क्रिएट मैटर पे गए, then you can add proceedings over here, जो भी आपके proceedings आपके हैं, then it will show the timeline, documents आप अपने add कर सकते हैं, and the relevant judgments. Yeah, I think the main things are there are software which are there in for matters management, but those are standalone software that you separately take. So we have built in as part of Niyam.ai offering. So this is the only platform that you need to have. It's not something that you need to basically take it separately. That okay for matters management. I think Neeta, you also told na so people used to take over. What was the platform that they used to take? तो यहाँ पर मैं एक प्रो वकील करके है जिसमें आप सिर्फ अपने मैटर्स को कर सकते हो, But यू कैन जस्ट yeah, so all those things are so हमारे पास जो है आपका सब कुछ एक साथ है, एक ही जगह है, और अल्टीमेटली आपको एक ही जगह कंट्रोल हो जाएगा, so that you have a full feature at one place. लाइक आई हैव एडेड वन ओवर हियर, इसमें प्रोसीडिंग्स के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो, टाइमलाइंस डॉक्यूमेंट्स में क्या है, so it's like you can have the entire file over here saved. Like notices also, I'll just go through this. There was one notice that I was drafting. So this was the notice. You have to add the party's name and everything. यहाँ पर आ जाएगा. उसके बाद में रिप्लाई का भी ड्राफ्ट ले सकते हो. एनालिसिस में जब मैंने किया तो इट शोड कि क्या क्या प्रोविजंस है इसमें, फिर सजेस्टेड स्ट्रैटेजी क्या है और क्या एक्शंस हमें लेना है इस चीज़ में. तो बेसिकली क्या है कि कोई भी आप नोटिस अपलोड करोगे तो उसमें आपको ये पूरा एनालिसिस करके बता देगा कि भाई इस नोटिस को आपको कैसे अटेंड करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी लेना है और क्या क्या कैसे आप हैंडल कर सकते हो, और ड्राफ्ट रिस्पॉन्स में भी आपको हेल्प करेगा. So that is also one of the very critical feature that is already there as part of the system. तो so एक एंगल नहीं है. आप क्लाउड में जाते हो आपको रिसर्च हो जाती है, आप कोई और केस मैनेजमेंट का में जाते हो आपको मैनेज कर सकते हो, कोई और सॉफ्टवेयर लेते हो आप ट्रांसलेट कर सकते हो. यहाँ पे सब कुछ आपको एक अंडर वन ही विंडो मिल रहा है और एवरीथिंग मिल रहा है, ऑडिटेड मिल रहा है पूरा. या नॉट जस्ट दैट, हमारे पास एक टास्क मैनेजमेंट फीचर भी है जो आप अपनी टीम को, आपके कलीग्स को असाइन कर सकते हो. यू कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू टास्क यहाँ पे, फॉर एग्जांपल प्लीज फॉलो अप ऑन 27th June 2026 फॉर दिस XYZ क्लाइंट. मैंने यहाँ पे एक टास्क डाल दिया. ठीक है, अब ये टास्क में मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल के आई कैन ऑल्सो असाइन इट टू माई टीम मेंबर, सो इट मेक्स इट वेरी वेरी एफिशिएंट एंड ईजी फॉर यू टू मैनेज एवरीथिंग अंडर वन रूफ. तो आपका रिसर्च भी हो गया, ड्राफ्ट भी हो गया. वी ऑल्सो हैव बल्क ट्रांसलेशन जहाँ पे आप अपना सारा का सारा ट्रांसलेशन जो भी आपका होगा, यू कैन जस्ट बल्क ट्रांसलेट एवरीथिंग. जस्ट आप आइए, आपका कोई भी आपका इमेज हो गया या कुछ भी हो गया, आप अपना यहाँ पे अपलोड करिए. वी विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट इन एनी लैंग्वेज दैट यू वांट. जहाँ पे अगेन वी विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस लेवल स्कोर कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल स्कोर कितना क्या हुआ है. दिस इज समथिंग अगेन यू कैन नॉट डू विद चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड. आप ये स्केल पे, ये लेवल पे और ये मैनेजमेंट पे यू विल नॉट बी एबल टू डू. प्लस एट द सेम टाइम द एक्यूरेसी इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. But more importantly, you will not have a very clean dashboard जहाँ पे you can manage everything. Security wise as well, we are completely MD5 secure.
We follow DPDP compliant completely. So we are a very compliant company at the same time, जहाँ पे आपका अकाउंट खाली आप ही के पास एक्सेस है, no one has access to that. So security wise as well, we have ensured of that, and very soon we are applying for SOC2 type 1 license as well along with ISO. उसके लिए हम लोग बहुत जल्द अप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज हमें पता है कि लॉयर्स के लिए उनकी सिक्योरिटी, उनका डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगेन निहित बीइंग अ हाई कोर्ट लॉयर हिमसेल्फ, ही अंडरस्टैंड्स कि कितनी माइन्यूट एंड माइन्यूट तरीके से जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसका भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। साथ में एक बार आपके यहाँ पे मैटर्स आ गए, नोटिस भी आप पूरे के पूरे मैनेज कर सकते हो। एवरी सिंगल नोटिस दैट यू आर गेटिंग यू कैन जस्ट क्विकली ड्राफ्ट योर रिप्लाई, एंड वेरी सून अगले हफ्ते तक हमारा एक फीचर और आ जाएगा जहाँ पे ड्राफ्ट की जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी आप ही की तरह होंगे, बिकॉज एवरी सिंगल लॉयर हैज गॉट देयर ओन टोन एंड ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। सो यहाँ पे आप अपने एआई को पूरा का पूरा अपने तरीके से लिखवा सकते हो, अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, अपने स्टाइल में लिखवा सकते हो। आप जो वर्ड्स हमेशा यूज़ करते हो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो एआई हमेशा वही लैंग्वेज यूज़ करेगा। एंड अगेन आप कोई भी लैंग्वेज में वो ड्राफ्ट कर सकते हो। सो अगर आपने एक इंग्लिश में ड्राफ्ट कर दिया, नाउ ड्राफ्टिंग द सेम कॉन्ट्रैक्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इज वेरी इजी। आपको खाली आके यहाँ पे एक बटन दबाना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, एंड दैट्स इट। वो पूरा का पूरा आपका जो भी कंटेंट होगा, जो भी आपका ओरिजिनल नोटिस होगा, तुरंत उसके रिप्लाईज यहाँ पे ड्राफ्ट हो जाएंगे। एंड वंस दिस इज ड्राफ्टेड, यू कैन देन टेक, उसमें भी हम डीप एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि ये चीज़ मिसिंग हुई है, ये चीज़ मिसिंग हुई है, ये सेक्शन में है, विच अगेन सेव्स यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। सो हमारा एक ही गोल है कि हाउ कैन वी सेव योर आवर्स, योर बिलेबल आवर्स, ताकि आप वो बिलेबल आवर्स से आप और क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकते हो, एंड यू कैन एग्जीक्यूट एवरीथिंग, राइट। हमेशा एक एक चीज है, एआई आपका 95 to 97% काम कर देगा। लास्ट का जो 2 से 3% होता है, वो आप अपने ह्यूमन आई से एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है, उसके बाद यू कैन सेंड इट अक्रॉस टू एनी वन दैट यू वॉन्ट, राइट। एंड आपने कभी भी यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए, इफ यू वॉन्ट टू री एनालाइज द एवरी एक्शन, आप एक एनालाइज का बटन दबा दीजिए। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी री एनालाइज्ड आफ्टर एवरीथिंग, राइट। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर आइटम्स दिए हुए हैं कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। वंस यू हैव मेड दोज चेंजेस, जस्ट टिक दिस मार्क, राइट। नोटिस की पूरी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। एंड अगेन दिस इज चीपर देन बाइंग अ सब्सक्रिप्शन फॉर चैट जीपीटी क्लॉड, बिकॉज आप उसके 4 प्रॉम्प्ट डालोगे, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा वहां पे। दैट इज हाउ एक्सपेंसिव चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग हैज बिकम, वर्सेज यहाँ पे इट इज हार्डली जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे अगर आपको कोई आके जजमेंट्स भी ढूंढना है तो आप ये कर सकते हो। विद इन नेक्स्ट मंथ हमारे पास 17 मिलियन हाई कोर्ट के जजमेंट के एक्सेस भी है, जिसकी ऑनगोइंग अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो यू विल सून हैव एक्सेस टू 17 मिलियन हाई कोर्ट जजमेंट्स, 1 करोड़ 70 लाख हाई कोर्ट जजमेंट्स, और करीबन करीबन भी 1 लाख के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जजमेंट्स भी हम यहाँ पे अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो वो भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेसिबल हो जाएगा, एवरीथिंग फॉर जस्ट 1500, राइट। एंड यहाँ पे आपके जो भी सेशंस हुए हैं आपको सब दिख जाएंगे, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं आपको सब दिख जाएंगे। आपके लिए बहुत एफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना, बहुत सब कुछ एफिशिएंटली मैनेज करना। नॉट जस्ट दैट, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नियम में कोई फीचर की कमी है या आपको और कुछ चाहिए, आप हमें रीच आउट कर सकते हो, एंड वी विल बिल्ड दैट फीचर फॉर यू इन लेस देन अ वीक ऑफ टाइम। बिकॉज अगेन ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने जो बनाया है, हमने इसको एज अ लॉयर कम्युनिटी के लिए बनाया, बिकॉज हमें पता है कि लॉयर कम्युनिटी के ऊपर, एआई के ऊपर कोई भी इंडिया में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, और जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने चैट जीपीटी को लेके चैट जीपीटी के ऊपर कुछ ना कुछ बना दिया है। सो हमारा एक ही गोल है कि हम चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यूएबल बिलिंग आवर्स है हम वो सेव कर पाए, ताकि यू कैन ऑन बोर्ड एंड मैनेज योर क्लाइंट इन अ मच एफिशिएंट मैनर। यस मुनीब, प्लीज बताइए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मुनीज भी आप अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। Hello, hello. Can you hear me? या वी कैन हियर यू। Yeah. Uh, what about this hallucination you are saying? I am using NotebookLM
which is giving accurate answers. Whatever, if suppose if I want to make a counter affidavit for a writ petition, when I'm uploading, and the laws which I need to be for that counter affidavit, when I'm uploading, it is giving exactly. And the translation part, this is what I'm getting in Notebook LM. And what the problem today the advocates are facing is of hallucinations only. Okay, so RAG is a system where from your data it should be extract whatever it is extracting. Mm-hmm. It should be extract from that data only. Mm-hmm. So mostly what we advocates need is means we have some laws. I will work on some different laws. So my Mm-hmm. data is completely different from that database. It has to Mm-hmm. be draft what it I'm drafting. So Mm-hmm. how you have that futures? I mean, in your application, if I want to upload 10 different law acts or some regulations, something from that regulations, it has to be extracted the data. So how it will be at that time? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन मुनीब जी। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा खुद का एआई मॉडल बनाया है। हमने यहाँ पे जितने भी एक्ट्स लॉ है उसकी हमने ट्रेनिंग की है हमारे ही एक मॉडल पे। हम ट्रांसफॉर्मर्स करके जो कोर टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई सब बनी है। इसको अगर आप गूगल करोगे तो ट्रांसफॉर्मर्स टेक्नोलॉजी का नाम है। तो हम ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर हमने सारी की सारी डेटा ट्रेनिंग की है पिछले 2 साल की से। तो ये 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। अब आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है जहां पे आप आके No. अपनी खुद की जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके वहां से चीजें बना सकते हो। मेरा मेरा एक सवाल है। कुछ केसेस में अगर मेरे पास पार्टीज 40 पार्टीज है, 50 पार्टीज है, सबका अपना अपना काउंटर्स है, मैं उनको सबको सारों को अपलोड करना है, फिर हम्म। मेरे को उनका सबका पढ़कर स्टडी करके मेरे को जवाब देना है। उस टाइम पे क्योंकि मेरे केसेस में लैंड डिस्प्यूट्स में जो है अगर 50 50 पार्टीज होते हैं कुछ जगह हम्म। पर, तो 50 पार्टीज अपना अपना कंटेंशन जब रखता है कोर्ट के सामने, तो वो हम्म। 50 कंटेंशंस को मैं अपलोड करूं, फिर समझो, फिर अपना काउंटर लिखूं। तो इस टाइम में मेरे को 50 काउंटर जो सामने हैं उनका पढ़कर ही करना है। तो उस टाइम पे हम्म। मुझे 50 अपलोड करना पड़ेगा सबके काउंटर्स इस हम्म। जब समझने के लिए। उस टाइम पे आपका एप्लीकेशन कैसे सपोर्ट करेगा मुझे? ग्रेट क्वेश्चन मुनीष जी। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, आपके ये रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे क्लाइंट सेक्शन बना देंगे। ठीक है, ये हम अगले 3 दिन के अंदर लाइव देखिए, कर देंगे। राइट नाउ मैं जो यूज करता हूँ आज हम्म। की डेट में, नोटबुक एलएम वन ऑफ द बेस्ट रैक सिस्टम के लिए, वन ऑफ द हंड्रेड बेस्ट परसेंट एप्लीकेशन विच आई ओके। द सेकेंडरी, इफ आई गो विथ क्लाउड ऑल्सो, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग मल्टीपल LLMs. I am हम्म। using whatever you are done here, it is called a framework prompting. Is it okay हम्म। what I'm saying? ये So the एब्सोल्युटली same एब्सोल्युटली। concept, what I am using for my counters, it is framework prompting. What you have shown in your applications, I use हम्म। multiple हम्म। LLMs. I will give from prompting to Chat GPT. From there, I will use, and then I will use it in Claude, because Claude is very one good in reasoning and drafting. So okay, हम्म। this type of, I mean, I'm getting very good results with that application. So why I should transfer it for you when I'm having that much big, huge kind of work? So सबसे that पहले तो facility is available with you? So, Munib ji, firstly, as you have rightly mentioned that you're using multiple application, Mm, managing things when it comes to multiple application becomes very tedious. mm. Second thing, everything is just sessions over there. Nothing is in UI UX. They are not organized, right? So if you have to look up for your old data, you have to No, constantly look for this your old part of application. organize what you are saying, it's for small kind of work, for single drafting like that. But when it coming for big cases like that, multiple parties are there, multiple draftings are there. That time, see, simple what you are saying, draft a simple petition like that, notices and that all that. But at a large level, if I'm going for a big cases, in Mhm. that time it will, I mean, how it will support for me? Yeah, I so have to load exactly. 50 parties. Their counters and all that, then I have to answer with that time I have to go with all that enough. So, Physically they will Munib, supply me the hard copies, then I will make it scan, I will upload here in correct. the notebook LM, then I will study from that, then I will go for chat GPT, I will use prompt formatting, then I will go with the cloud. This kind of applications I am using 3 4. So combining all these 3 4 can be come in one application. I am seeing such an application which can be Definitely, Munib ji, integrated in one part. what I we am will using Obsidian for my second brain. I am putting some data in the Obsidians. I am taking from there. But all this multiple applications, I have to use it for my work right now. correct, So correct. uh, So, Munib ji, what we combination will of all that can be
Absolutely, Munib ji. So what Yeah. we will do is we'll connect you after this call specifically, understand your workflow completely, and within 3 days, we will make your entire workflow go live within the application. So I understood what you're saying, but I'll connect separately with you if that's okay with you. And then Okay, within the okay, next fine. 3 days, we'll build the entire workflow so that it's very easy, efficient for you. Also, at the same time, we are working on a mobile application as well, which is supposed to go live most likely by next month then. So let's say that even if you're I using tried more than 50 LLM different models, but Mhm. right now for the advocacy, Claude, Notebook LM, for especially for drafting purpose, Claude, Notebook research and drafting purpose, I Mhm. find these three best applications. No, Claude, absolutely, Claude absolutely. Cowork is one of the best which is helping me, and Notebook LM. Absolutely, For Monique. Our mm, entire idea is to make your life extremely easy. So, as I mentioned, we'll mm, connect and within next 3 days, we'll make your entire workflow go live. So, okay, again, we are young in the market, but at the same time, we are constantly growing. We are building things as per our customers' needs and requirements, and we are building it in the most efficient and very quickest manner at the same time. So, whatever you have mentioned, we'll just turn that into an entire workflow where you don't need to manage four, five, six different applications. Everything will be disorganized. You can just come here, upload everything, and everything will happen for you automatically without you lifting any finger, right? So let's just connect after this call to understand your workflow once, if that's okay with you. okay, okay, fine, thanks. Thank you so much. So, any other question? Because we are approaching end of the time. I think one of the questions was a lot of people have asked about the pricing. We have already published it on the chatbot. So it's very, very reasonable. It's much cheaper than subscription to ChatGPT also. Monthly we go at to 1500 and annual is 15,000 rupees for advocate. And the best part is today we are offering you additional 30% discount. I'm just putting on chatbot the code which is there. You can use this code and take a 30% discount valid only for today, um, and only for limited subscription. So those of you who want to share it, so it is only for the community here. So just for the community, we are giving us additional discount of 30%. But please feel free if you want to reach out to me. I'm also putting my number. I will be happy to speak to you on any other support that you may need in sign up and everything. So here is my number and email ID is also given. So please reach out to me personally. Happy to answer any final questions if you have. Please let us know if anyone has any questions. We are more than happy to answer and help you with your entire journey and save you hours, your valuable hours, which is the entire goal of Niyam team. Okay, I guess we don't have any questions. So, everyone, thank you so much for joining in. And we will be hosting another webinar next week. And we look forward to joining you next week. We'll share more tips, strategies, how you can use AI in your daily work life as a lawyer. And you can save a huge amount of time. So, every week you would see us doing a webinar. So, make sure that you save Saturday, 11 a.m. Every Saturday. And we'll see you next week, everyone. Sorry, Sunday. Yeah. Bye, everyone.